My dear students, I am Professor H.R. Saini. I did my MSc from IIT Delhi and MPhil from Guru Nanak Dev University, Amritsar. Then I joined DAV College Jandhar and I taught there for more than 40 years. I have been guiding the students preparing for the IIT, JEE, AIMS and other medical entrance examinations, and many of my students are very well placed both in the medical as well as in the engineering field. My today's lecture will be on Newton's laws of motion. तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या हैं। न्यूटन ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो कुछ उन्होंने देखा, पढ़ा, लिखा, उसके हिसाब से he summed up all his observations in the form of 3 laws which are known as the laws, Newton's laws of motion, because these 3 laws govern the motion of all material bodies, and these laws are Newton's first law. This law states that every body in this universe continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. इसका मतलब ये बना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, और अगर वो मोशन पे है तो उसी स्पीड से वो चलती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकते नहीं। तो इसका मतलब जो पहला लॉ है इसके 2 पार्ट हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, एंड इनर्शिया वी कैन डिफाइन इन 2 ways. Number 1, it is that property of a body by virtue of which it tends to maintain its state of rest or of uniform motion in a straight line. और दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि inertia is the property of a body due to which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion. So that is Newton's first law. The second law is, it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and this change takes place in the direction of the applied force. अब इसका क्या मतलब बना कि मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम हो गया m into v, because you know that momentum is the total quantity of motion contained in a body, and it is measured by the product of mass and velocity. Mass is scalar, velocity is vector, so momentum is also a vector. It is generally denoted by small p vector. The direction of p is the same as that of the velocity of the body, and the magnitude of momentum, that is p mod, equal to mv mod, and its units are the same as those of mass into velocity. Therefore in SI the units of momentum are kilogram meter per second, and in the CGS system the units are gram centimeter per second. Now the second law says that if we apply some force on the body, its momentum will change, and the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. So therefore if I apply a force F on the body whose momentum is p, then rate of change of momentum is dp by dt. आपको पता है कि dp over dt का मतलब है differential coefficient of p with respect to t, and it is also called rate of change of this, that is p with respect to t, and because p is momentum and therefore dp by dt means rate of change of momentum. So Newton's second law says that this rate of change of momentum is directly proportional to f. यहाँ मैं कह सकता हूँ और f proportional to dp by dt, or you can say that f proportional to ddt of m into v. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अब फॉर ए गिवन बॉडी
एक बार जो बॉडी हमें दे दी उसका मास जो है दैट इज कांस्टेंट, तो मास जो है दैट आई कैन टेक आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, सो आई गेट F proportional to m into dv by dt, and dv by dt means a rate of change of velocity, and that is called acceleration, denoted by small a. So therefore F proportional to m into a, or you can say that F equal to k m into a, where k is the constant of proportionality and its value depends upon the units in which we measure force, mass and acceleration. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. If we select a unit force as that force which produces unit acceleration in a body of unit mass, मतलब अगर हम यूनिट फोर्स उस फोर्स को लें जो किसी यूनिट मास वाली बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन पैदा करे, देन दिस इक्वेशन विल बिकम, एफ हमने यूनिट लिया, के तो है ही है, मास भी कितना लिया यूनिट, और एक्सेलरेशन भी यूनिट. इफ वी चूज या सिलेक्ट ए यूनिट फोर्स एज दैट फोर्स which produces unit acceleration in a body of unit mass, then k will come out to equal to 1, and therefore if I put k equal to 1 over here, I get F equal to m into a. So that is the fundamental equation of motion. This equation is called fundamental equation of motion. If we know the mass of a body and the acceleration produced, we can find force, and if we know the force and mass, we can find the acceleration produced in the body. In fact, Newton's first law gives us a qualitative definition of force. पहला लाभ बताता है कि फोर्स है क्या चीज है. ये फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है या चेंज करने के लिए जरूरी है, यानी कि चेंज करने की कोशिश करती है. और जो सेकेंड लॉ है, दिस गिव्स अस द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. इसका मतलब बनता है कि फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, हाउ कैन वी मेजर फोर्स. सो देयरफॉर वी कैन से दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए मेथड ऑफ मेजरिंग फोर्स. नाउ वी कम टू द यूनिट्स ऑफ फोर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स. नंबर 1, absolute units. Number 1, absolute units, and number 2, gravitational or practical units. Gravitational or practical units. Gravitational or practical units. तो पहले हम पढ़ेंगे absolute units. So number 1, absolute units. इसमें पहले हम पढ़ेंगे SI. In SI, the absolute unit of force is Newton. And the symbol for Newton is capital N. यहाँ पे मैंने N छोटा डाला, न्यूटन. ये नाम है साइंटिस्ट का, लेकिन जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट लिखते हैं तो उसका पहला लेटर छोटा डालते हैं. जब हमने साइंटिस्ट को साइंटिस्ट लिखना है तो फिर पहला लेटर हम बड़ा डालते हैं. अब एक इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए देखो F इक्वल टू एम ए, जो भी हमने ऊपर प्रूव किया. इफ m इक्वल टू 1 किलोग्राम, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन F इक्वल टू 1 न्यूटन. दैट इज, अगर मैं यहां पे फोर्स कितनी पुट कर दूं 1 न्यूटन, मास कितना लूं 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Therefore 1 Newton is defined as that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Now, in the serious system,
the absolute unit of force is dyne. डाइन पूरा लिखना हो तो ऐसे, अगर सिंबल का के लिखना हो तो dy_n ई डालने की जरूरत नहीं, हम डाइन ऐसे लिखते हैं। अब जैसे मैंने डिफाइन किया न्यूटन को, उससे हम डाइन को कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अब m लेंगे हम 1 ग्राम, m लेंगे 1 ग्राम, a लेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और f आ जाएगा 1 डाइन। और यहाँ पे फिर इसी फार्मूले से हमारे पास आ जाएगा 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स 1 dyne is defined as that force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. Now, relationship between Newton and dyne. Relationship between Newton and dyne. Newton and dyne. Dyne. तो उसके लिए बहुत आसान, देखो मैंने क्या लिखा, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वल टू 1 किलोग्राम में देर आर 1000 ग्राम, तो यहाँ 1000 ग्राम लिख दिया, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया 10 पावर 3 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से पावर आ गई, 10 रेज टू पावर 5, और साथ में आ गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डाइन। दैट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। सो दिस इज वेरी यूजफुल फार्मूला। Then we have the gravitational or practical units of force. So in the serious system, पहले SI में कर, SI में है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, और सीरियस में है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। So 1 kilogram weight or 1 kilogram force is defined as the force with which a body of mass 1 kilogram is attracted toward the center of the earth. It may also be defined as the force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Likewise, 1 gram weight or 1 gram force is defined as the force with which a body of mass 1 gram is attracted toward the center of the earth. And it may also be defined as the force which produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. And therefore, 1 kilogram weight or 1 kilogram force equal to 9.8 Newton, 9.8 Newton, and 1 gram weight or 1 gram force equal to 980 dyne, 980 dyne. So that is Newton's second law of motion and the units of force. Now the third law is, to every action there is an equal and opposite reaction, but we are to keep in mind that action and reaction never act on the same body, they always act on two different bodies. और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनमें जो असली लॉ है, द रियल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इट इज बिकॉज द अदर 2 laws can be deduced from Newton's second law of motion. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Now you enjoy study, and please like, share and subscribe. Tomorrow we will have another topic. Thank you very much.